Hello friends, welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that urine examination in this video lecture. To detect the constituents which are present in that abnormal urine, this is called that urology, right? The medical science which is associated with that detection of that abnormal urine constitutes. So now we are talking about that medical related some types of tastes which are very important for our examination for abnormal urine sample. In this video lecture we are talking about that these types of tastes. First we are talking about that biuret test, then after sulfosilic acid test, urine sample with the added S-based reagents whenever, then after urine analysis with the help of Benedict reagent. Okay, Benedict reagent, why we are using in this test? Because we are detecting to glucose sample is present or not, means that monosaccharide is present or not, we can identify by the help of Benedict test. Then after we can perform the Barfoed's test. The Barfoed's test, it is indicates that monosaccharide is present or not, right? Then finally very important test is that Rother's test, most time we test. Why we are performing the Rother's test? Because of that Rother's test giving the idea about that creatinine is present or not in our urine sample. Okay, then after Thomas test performing, and Hayes test and benzidine test, which is very important for that urine examination. Hayes test gives the idea about that bile salt is present or not, or benzidine test gives the idea about that if the blood containing the urine, if the blood is present in urine, it is called the hematuria. Now the first test we are perform. First taking the urine sample in the test tube. Now add one by one CuSO4, means that copper sulfate. Its color, the purplish color is found, means that the positive taste of the protein is present in the urine sample. Now we are talking about the second test, is that sulfosilic acid test. Sulfosilic acid test, whenever the perform, the first add the urine sample in the test tube, then after add the sulfosilic acid in the test tube. You can see that white color PPT is found in that urine sample, because the sulfosilic acid, it binds with urine containing protein and gives the white preparation, means that the protein के साथ ये जो है सल्फोसिलिक एसिड बाइंड होकर कुछ व्हाइट कलर के प्रिसिपिटेशन में फाइंड आउट हो जाता है, व्हाइट कलर पीपीटी में देखने को मिलते हैं, मीन्स दैट albumin is present in the urine sample. Okay, now the third test is called that S-base reagent containing test. First of all, the taking the urine sample in the test tube, then after add the S-base reagent. S-base reagent, it gives the yellowish color PPT, find out because of that urine it contain albumin. Okay, so if the urine contain albumin, means that somehow that disease condition occurs, like that albuminemia. Now the talking about that Benedict test. The Benedict test, or whenever we are using the Benedict reagent, means that we are finding out that glucose present in that sample solution. Yes, तो आप सही समझे हैं, हम जानने वाले हैं यूरिन सैंपल में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है. तो टेक द फर्स्ट ऑफ ऑल द यूरिन सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब, देन आफ्टर ऐड द बेनिडिक्ट रिएजेंट. इट्स कलर्स like that. First of all, whenever we are adding the Benedict reagent in that urine sample, then after heating by the help of burners, and it's find out the if reddish or orangish color in the test tube, means that the reducing sugar is present in our urine sample. If we are performing that Benedict test, it is a positive, not go for the Barfoed's test, because whenever we are talking about that Benedict test is positive, means that glucose is present. Okay, but if the Benedict test is negative,
Okay, the glucose is not present, the negative, so we are going for that bar force test. Okay, so first of all, the taking the urine sample in the test tube, then after adds a bar force reagent in the test tube, then heat it out and the gives the red color ppt is find out, means that the monosaccharide, something like that monosaccharide, like that galactose, glucose or fructose may be present in our urine sample, right? Now we are talking about that most important taste is called that Rother's taste. Okay, the Rother's taste is giving the idea about that ketone bodies are present in not in our urine sample. The first of all, the taking the urine sample in the test tube, then after add the sodium sulfate and make the saturated sample by the help of stirring process, and now added the one by one nitroprusside solution in the sample test tube. You can see that first of all the yellowish color is found in the test tube, then after add the ammonia water by the help of the either side of that test tube. You can see that purple color ring formation in between the two solution. It is called that ketone bodies are present in that abnormal urine sample. Now we are talking about the Thomas test, which is performing for that glucose detection. Okay, here we are talking about the glucose detection. First of all, the taking that urine sample in the test tube, then after add the copper sulfate. यहाँ पर मिस्टेक से सोडियम सल्फेट लिख दिया है मैंने, कॉपर सल्फेट मान लीजिएगा. ओके, whenever we are adding the copper sulfate, it always find out in that bluish color compound, but then after we are second step is that adding the sodium hydroxide, it's converted to that reddish color, means that glucose is present. Now the third most important test is that Hayes test. Hayes test identify the bile salt is present or not in our urine sample. First of all, the taking this urine sample in the test tube, then after add the sulfur powder. If the sulfur powder it is not mixing with clearly in that urine sample, and bile salt it is find out in the bottom of the side, means that the bile salt is present. सल्फर के साथ जो भी बाइल सॉल्ट होंगे ना जो यूरिन सैंपल में, वो भी क्या करेंगे, बॉटम में आ जाएंगे. ओके, तो हेस टेस्ट इज पॉजिटिव अगर बाइल सॉल्ट क्या हो चुके हैं यूरिन जो सल्फर पाउडर के साथ बाइल सॉल्ट भी अगर बॉटम की साइड आ गए हैं, तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ द हेज टेस्ट. एंड बाइल सॉल्ट इज प्रेजेंट, it is not good because of that liver having a very dose, उस पर बहुत ही ज़्यादा भार आ रहा है कि आप किस टाइप का जो फूड कंजप्शन कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर रहे हो, तो उसे ज़्यादातर क्या बनाना पड़ रहा है, बाइल्स बनाना पड़ रहा है, बाइल जूस के सिक्रेट करना पड़ रहा है, और उसके साथ बाइल सॉल्ट भी आ रहे हैं. ओके, बाइल सॉल्ट का एक फंक्शन होता है कि पर्टिकुलर वो अल्कलाइन कंडीशन मेंटेन करने के लिए वो उत्पन्न होते हैं. लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाइल सॉल्ट का सिक्रीशन यूरिन सैंपल में से हो रहा है, तो दिस इज नॉट गुड. देन आफ्टर benzidine test. The benzidine test, it is gives the idea about that blood it is present or not in urine sample. So what about the procedure of the benzidine test? Now we are talking. First of all, taking out the dry clean test tube, and then after add the pinch of the benzidine powder in the test tube, add the 2 ml of the glacial acetic acid and adding the hydrogen peroxide and mix with them, and this mixture equally separate out in the 2 test tubes. Okay, mixture 1 में क्या होगा, mixture plus 1 urine 1 ml of the urine sample in 1 test tube. सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि मिक्सचर होगा, किसका मिक्सचर होगा कि बेंजीडीन पाउडर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मिक्सचर होगा, और उसमें क्या होगा, डिस्टिल वाटर होगा. ओके, तो जहां पर हमने यूरिन जिसमें लिया है मिक्सचर के साथ जिसमें मिक्स किया है, आप देख पाओगे कि तुरंत क्या होगा, ब्लू या फिर ग्रीन कलर डेवलप होने लगेगा. ओके, बिकॉज द यूरिन कंटेन ब्लड, so that benzidine
it binds with blood containing constitutes and gives the bluish color or greenish color, means that the blood is present. Now you can see that this is observation diagram, मैंने YouTube से ही लिया है, ओके कि आपको तुरंत ही समझ में आ सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. ओके, यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया कि मिक्सचर बनाया, देन आफ्टर उन्होंने क्या किया कि दो मिक्सचर जो है वो सेपरेट आउट कर लिया, इक्वल इन अमाउंट दो टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. देन आफ्टर वो क्या कर रहे हैं, ब्लड जिसमें ब्लड है वैसा यूरिन सैंपल ये जो मिक्सचर है उसमें डाल रहे हैं. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि sample containing test tube which contains the blood, whenever we are adding that blood in the mixture, it converted to the bluish color, means that the benzidine taste is present, means that the person या patients is suffering with the help is a hematuria. ओके, तो पर्सन जो है वो क्या है, हीमेटूरिया से सफ़र कर रहा है. हीमेटूरिया जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मीन्स दैट हमारे यूरिन में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो दिस इज़ नॉट गुड. ओके, तो इसे बहुत ही ज़्यादा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज हो सकता है, या फिर स्टोन प्रेजेंट हो सकती है आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू आवर डॉक्टर एंड जो भी वो कहे, यानी कि जो भी टेस्ट करवाने के लिए कहे आपको वो करवाए. ओके, इफ द टेस्ट पॉजिटिव ऑफ दैट हीमेटूरिया से रिलेटेड जो भी बेंजीडीन टेस्ट हमने परफॉर्म की, इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव मीन्स दैट सम ऑफ दैट कोजेस, सम ऑफ द किडनी डैमेजेस इज फाउंड. ओके, किडनी के रिलेटेड कुछ ना कुछ डैमेज फाइंड आउट हो रहा है. ओके, यानी कि एपिथेलियल सेल से जैसे ही अगर स्टोन प्रेजेंट है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो वो क्या करेगी, एपिथेलियल सेल्स को ब्रेक करेगी, ब्लड वेसल्स को ब्रेक करेगी, एंड देन आफ्टर ब्लड जो है वो सीक्रेट आउट हो सकता है बाय विद द यूरिन के साथ. ओके, तो ये थी हमारी सभी टेस्ट. आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और मेरी चैनल पर आप अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.